where they could share. And acute stroke is becoming a second biggest problem, not in the world, even in our country. And one of my counterpart from UK, he said, Chaudhary, I was doing neurointervention while in aneurysm, avian embolization, but now I switch over towards the treating acute stroke. I go, why? He said, if you don't do the aneurysm coiling or avian embolization, the neurosurgeon can do the surgery, and they have alternative, and they have a time. But if you don't treat the acute stroke, either he has to die or has to be handicapped forever. So this thing clicked me, and I thought, I hope I could, along with my team, we could start this thing in my country. Alhamdulillah, in 2015, there was a Korean in Turkey, one of the guys from Egypt. He was sitting with me, and after my presentation we become friends. And he said, I'm the pioneer establishing the acute stroke center in Egypt, in that surgery. I said, why don't you make it help me and we can start it in our country? This is 2015. In 2015, we had a live workshop for 2-3 days, invited him from Egypt. We did cases, 5 cases during that workshop of anterior posterior circulation of stroke. So why I'm telling you, because that gives you some only hope we can save these patients, even with in the GP clinics. Believe me, the GPs are the most important to save these lives of acute stroke. Why I said the life? Because either they have to die or handicap, or the handicap अकेला नहीं होता, the whole family handicap. कुछ हफ्तों के बाद the whole family says, यार यही मतलब वैसा कुछ कर लो, ये इनफेक्ट हॉस्पिटलाइज कर लो, फलां कर लो, मतलब वो उनके लिए बोझ बन जाता है. So आप पूरे खानदान को खराब कर देते हैं, वो बेचारा बिल्कुल फारिग हो जाता है. तो for that reason this issue is very important. So this is a very famous slide. I am sure most of the people have already seen it. I hope, inshallah, with some company we can make some printouts and putting these slides in your clinics, because very safe, very simple. Even your paramedical staff will tell with these symptoms, patient comes to you with a face, arm, speech, or time. So, there is not a big science in it. The only terms, and you just have to compare, and you could tell this is a case of stroke. So what do you mean by the stroke? If strokes happen, acute stroke happens, you can send this patient for the CT scan. As I was just looking on the workshop, there was a workshop on CT scan, and which we are asking different doctors to spend few hours in my department for CT reading, for brain particularly, and for MRI, for angiography. So they should have an orientation. And I welcome Tariq Saab, whenever he wants to send some guys for a few hours, in a week, in a month, believe me, it will work the purpose, how to rule out, how to exclude, how to include the stroke cases. So, this is another very important, simple but very important slide. Generally, these patients can be safely treated when come to your clinic. First level is just to control 3 things. BP, if you have a scan at excess, and after the scan, there is a clinically you are suspecting stroke, but CT scan looks normal, please don't care about the blood pressure. Give him a free hand. 200 chala jaye, 250 chala jaye, because this BP control will be a disaster for that patient, because उसमें platelets develop होने, I'll show you that slide where the platelet will develop. The patient is totally safe, even having a big clot और जिसने आर्टरी को मेरे सेपरेट आर्टरी को बंद किया था. दूसरा most important, पहली बार BP को बिल्कुल खुला छोड़ते हैं. Blood sugar should be around 140. आप में से ज़्यादा अवेयर है, लेकिन 140 इवन फास्टिंग और डायबिटिकली और बाद में इट्स मोर लेस द सेफ. सो ब्लड शुगर जिसको हम कई दफ़ा एक्यूट स्टेज में भूल जाते हैं कि इट शुड बी मेंटेन. तीसरा ऑक्सीजन सैचुरेशन, एंड दीज 3 facilities आई एम श्योर अवेलेबल और यू कैन सेफली डील इन योर क्लिनिक्स along with a CT scan. CT scan can be 2 options, and in private sector it's not even that expensive, 2,000-3,000. In government sector, if you send it to the emergency, it's a free. If you send it to an outer place, within
it is 500 or 1000 in tertiary centers, in the DHU levels. So these, there is no excuse for it doing CT scan along with this thing. Simple CT scan. I'm not asking for CT or something else. Second level TPA. Luckily, in government sector, TPA is not available. And for over 42 patients of ischemic stroke, there are another slides which are more or less academic, but these are the slides which are very important, which, I always tell my colleagues, when you deliver something, you want to impress people or you want to convey something. My aim is to convey something, whatever I learned with my small experience. So TPA within 3 hours, initially the trend was giving a TPA, chemical thrombectomy. The patient, they wait for their response. It's a wrong. I'll tell you one thing more, I'm sure it's a new thing for most of you. The bigger vessels clot, usually you get a clot in the bigger vessels. TPA is useless. The only thing is TPA is good for the distal embolies in the small cortical embolies. So when you do the mechanical thrombectomy, which we are doing it at Lahore General Hospital, it's the first center in the country. And I'll tell you how we started, and you will laugh how the first patient we get in and how we force him to come for this treatment. So the third level, which is done in the tertiary center, because you need induced feed and all this stuff and post care and all this. So again, initially I said there are two issues. One is either patient has to die or has to be handicapped, and there is a success rate internationally is 60%. If we get a 60% or 50% results, so I think it's a big achievement on behalf of the family or on behalf of the patient. And this could happen to anyone. Recently, a few months back, I'll show you that slide. 14 years guy, the girl came, no money, nothing, a mom was just daughter, and we are able to save her from the stroke. I'll show you that slide. So mechanical thrombectomy, tertiary center, which one of the center which we have Tuta Puta, that is Lahore General Hospital. And TPA plus minus. It's only dependent if you have access to the TPA in private sectors, because so far in government is not available of its cost, and it's run by the neurologists. So along with that, one should go for the mechanical thrombectomy. One shouldn't wait for a few hours. Then again, it's become a disaster. So strokes are two types. This is more or less academic, but I think these things should be in your mind. One is arterial stroke and one is venous stroke. Again, that comes as I requested Mia Saab send some doctors के CT scan को simple पढ़ना आज. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. स्ट्रोक का पेशेंट आता है, आइदर उसने हेमरेजिक होना है, गायनी के लोग बैठे हैं तो, और या इस्कीमिक होना है. हेमरेजिक स्ट्रोक या वीनस स्ट्रोक होगा, उसका एक बड़ा कॉमन साइन है, सीजर एक फिट पड़ेगा, हेडेक होगी और हेमिप्लीसिस या जो भी व्हाटएवर द थिंग्स होगी. ये उसकी क्लिनिकल स्कैन में आपको 100% कंफर्म हो जाएगा विदाउट ट्रेनिंग. हार्डली एक दिन चाहिए फॉर ट्रेनिंग एंड यू पीपल कैन कम एंड जस्ट टू सी दो स्कैन्स, क्योंकि इट्स अ लार्जेस्ट सेंटर इन द कंट्री. arterial stroke, which is the topic of today, उसमें आपने CT scan करने के बाद ये देखना है, is it a small vessel disease, आपको rule out हो जाएगी. You don't have to worry about कि जी इसके लिए कोई mechanical thrombectomy करनी. If small vessel disease है, you have to go with your medicine and everything. If you have to say watershed infarct कि वो territory के अंदर है, you have to go for the heart कि atrial fibrillation तो नहीं है, वो dehydration तो नहीं हुई. The thing is, ischemic stroke, scan looks normal, and clinically the patient is having ischemia. उसमें वही तीन चीज़ें आपकी आएंगी. ब्लड प्रेशर को खुला छोड़ दो, शुगर को 140 के गिर्द कंट्रोल करो, सेचुरेशन को वेल मेंटेन करो, और ये दो तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं. एम्ब्रोलॉजी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. हम लोगों ने सारों ने ये पढ़ा हुआ है कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी, बल्कि मैं तो नॉर्मली सप्ली भी खाई हुई है कि घर में कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इट्स अ रॉन्ग. मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. ये चीज़ें हैं जिसके लिए डेडिकेटेड जो है हाई स्पेशलिटीज़ में आके आप हफ्ता दो दिन के लिए आए तो एटलीस्ट स्ट्रोक की अवेयरनेस के साथ आप लोग क्लियर हो जाए.
So generally आपने देखा आपके पास डॉक्टर है, I'm sure few GPs are doing doctor as well, कि carotid artery, internal carotid is not discernible, so nothing to worry. I see one can live without internal carotid artery, one can't live without external carotid artery. ये इतना सेफ है जो हमारे जहन में नहीं है, क्योंकि इंटरनल carotid एक आर्टरी होती है, इट्स chunk of 5 segments और उसके बाद बनती है. But it's not a topic of today, but at least you should be knowing it. So whatever you people are doing it, we can give you some the sport training in our department for dedicated to the stroke, because this is most important. This is embryology, this is again these are the different segments, because this is a mixture of many lectures, but it's not that important to be discussed here. But one should be knowing it कि one segment is अगर बंद हो तो दूसरी segment की सप्लाई दूसरी तरफ से आती है. जो मैं आपको बता रहा था कि बीपी आपने क्यों रखना है, उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी एक नाली बंद है तो दे कैन गेट अ सप्लाई फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्कुलेशन, और एक हिडन वेसल्स होती है उससे लेप्टोमेनिंजियल वेसल्स कहते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन, इसी तरह बिल्कुल हार्ट की तरह ही है कि कोलेटरल वेल्व होते हैं, सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क है. इसमें आपने इनिशियली अगर आप गेम अच्छी खेल गए और बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश ना की तो ये पेशेंट बच जाए, क्योंकि हम लोग बचपन से बड़े तक ही सुनते थे बीपी को कंट्रोल करो. इट्स ए डिजास्टर फॉर द स्ट्रोक पेशेंट प्रोवाइडेड सीटी स्कैन इज नॉर्मल. ये सेगमेंट्स जिस तरह मैं बता रहा था इस अगेन एकेडमिक, बट वन शुड नो इट, इसके 4 सेगमेंट्स होते हैं. सो एज आई वाज टेलिंग द आईसी कैप्शन, ये माय फेवरेट, ये दिस इज द वेरी माय फेवरेट स्लाइड, विल टेल यू द एम्ब्रोलॉजी ऑफ द ब्रेन वेसल, बिगर वेसल्स. ये मेरे उधर क्लासरूम में भी लगी है, तो जनरली मैं डॉक्टर्स को ये कहता हूँ यार इसको क्लियर कर लो, देन यू कैन अंडरस्टैंड द हेमोडायनेमिक्स ऑफ द ब्रेन और इजीली टू डील विद द डिफरेंट पैथोलॉजी ऑफ द ब्रेन. So this is again for the anastomosis. This is not important. This is again slide for the anastomosis. MC, I'm sure you have seen these. So it would just tell you how to play with these vessels, but it's not. Yeah, these are important, which I'm talking about. When you give the BP pressure free hand, so leptomeningeal will be open. Anterior communicating is just a tube, there is no perforator, तो वो खुल जाएगी. दूसरी communicating पीछे से सप्लाई आगे को आ जाएगी. अगर होता है एक middle meningeal artery वेरी फेमस, ये ट्राई टू गेट द मिडल सेलुलर आर्टरी को बनाने की कोशिश करेगी, और ये सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को खुला छोड़ने से ये पेशेंट ठीक होगा. उसके बाद ये केस है, इस केस का वाई एम टेलिंग यू बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस केस केम टू मी एंड द फैमिली मेंबर वाज सिटिंग विद मी एंड दे सेड सर हमारे अब्बा को स्ट्रोक हुआ, ये वो सारा कुछ हुआ, तो हमने सीटीए कराया. दे डिडंट मेंशन द टाइम पीरियड बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द टाइम पीरियड इज बिफोर 16 आवर्स. For the anterior circulation and for posterior circulation, we can go up to the 24 hours. क्योंकि अगर बेसल आर्टरी में क्लॉट बड़ा पेशेंट है, मरना ही मरना है, तो इट्स बेटर टू सेव इट, तो वी कैन गो अप टू 24 आवर्स. तो इसमें है, तो उसने इसमें अगर आप देखें एक जगह ये दिस वेसल लेफ्ट एमसी इज इंक्लूडेड हियर, मिड में इंक्लूडेड है, और मैंने कहा यार हाउस पेशेंट, तो कहते जी ये साथ बैठे हुए. अब आफ्टर हैविंग दिस सीटीए, अगर आप जनरली इसके ऊपर ही डिसाइड करना होगा तो आप कहेंगे यार फॉरन तो कुछ हो जाएगा. जबकि आप इसको गौर से देखेंगे तो ये इसमें नॉट ऑब्वियसली ये छोटी छोटी लाइन स्ट्रीक्स आ रही हैं. These are the vessels supplying that area जो यहाँ से included हुई है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, तो मेन लेफ्ट एमसी ब्रांच थी जो उसकी. सो ये चीज़ें ये है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर काम कर रहा है, सेचुरेशन काम कर रही है, और जिसमें आपका शुगर काम कर रहा है. Sugar is very important. So again, neuroimaging at early stage, most important stage as the GP clinic, where you should have access to CT scan there after the clinical assessment. There are 2 things to assess. Scan looks normal, to exclude the hemorrhage. To exclude the hemorrhage, go for BP को खुला छोड़ दो. ये लफ्ज़ बड़ा सिंपल है, believe me, it will help you a lot. It will help you a lot. बल्कि इनफैक्ट मेरा आने का मकसद पूरा हो जाएगा अगर if you start practicing this along with the CT scan, तो आपकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी. अगर आपकी एक्सेस CTA के अंदर भी है साथ ही, if you go for CTA you can even tell where it is, but it's not that important. Simple scan is important in this case. As we are doing mechanical thrombectomy,
chemical thrombectomy is no more used because it's a hemorrhagic rate है. Mechanical thrombectomy में we go through the catheter और ऊपर जाके clot को retrieve करते हैं, ये सब करते हैं. It's not a difficult thing. Believe me, it's easier than neurointervention, it's easier than cardiac intervention. The only needs some commitment. My father used to say one word is सिर्फ perform है, but once you involve, you will enjoy it. ये recreation में ये सारा कुछ is not time is brain. As I told you, it is circulation 6 to 16 hours in 24 hours. सिर्फ उसमें ये कि जब delay हो wake up stroke बड़े खतरनाक होते हैं, उसमें you can't save it है. ये एक term आपने याद रखिए, wake up stroke. आपको पता ही नहीं कि कब stroke हुए. उसके अंदर CT और CTA कराना ज़रा ज़रूरी हो जाता है और कई दफ़ा परफ्यूजन स्कैन हो जाती है, उसके लिए आपको टर्शियरी सेंटर भेजना पड़ता है. बट जनरली जस्ट हैव अ CT स्कैन, इट कुड हेल्प यू. अच्छा, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया माइल्ड स्ट्रोक सिम्टम, ये आप यू कैन टेल अगर TIAs हो रहे हैं, यू कैन सेफली यार डॉक्टर करो बाद में करो, पर CT स्कैन और क्लिनिकल असेसमेंट. और बाकी ये है, मैंने ब्रोशर सर्कुलेट किया है, वो CT स्कैन में पड़ जाता है. यही हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, नॉट ओनली द रेडियोलॉजिस्ट, नॉट ओनली द न्यूरोसर्जन, नॉट ओनली द neurologist, not only the psychiatrist, to all one, to all GPs. But in fact, you are the right person to be involved in this. So these are different studies. Mr. Green, just remember this thing. In 2015, when we are having a workshop or sort of a workshop, 24 hour रात को जाके केस कर रहे हैं, उसी दिन ये स्टडी पब्लिश हुई थी कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इज एक्सीलेंट रोड फॉर द 6 hours. So alhamdulillah, Allah helped me on that day. So ये different studies हैं. This is important. One thing, right patient, right device, right center, then we go get 50 to 65% good results. So this is our aim. We made a stroke protocol. Patient coming from the GP clinic or from the emergency, तो उसमें CMO पहले स्कैन कराते हैं और फिर आगे से हमारे पास भेजते हैं. ये पुराना प्रोटोकॉल था जब मैंने स्टार्टेड. फिर उसको स्टॉकहोम के साथ ये टेक्निक्स होती हैं विच वी डू इट हेयर, और ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं. क्लॉट नीचे रिट्रीवर के थ्रू आ रहा है नजर. ये दिस इज द केस डन बाय द इजिप्शियन गाय और अलॉन्ग विद माय टीम. एंड दिस इज बेसरल आर्टरी का. इसमें टोटल ये बंद थी, इधर से ये बंद थी पूरी, और खुलने के बाद कुछ सेरेब्रल आर्टरी भी नज़र आ रही है. दिस इज द फर्स्ट पेशेंट. ये हमने पहली वर्कशॉप की थी, अफगानिस्तान से भी लोग गए थे और इधर से नेपाल वगैरह से भी आए थे, और विद अदर आर्मी गाइस और विद अस एट दैट मोमेंट. सो दिस वाज द क्लॉट MC आपको नज़र आ रही है. फिर खुलने के बाद ये मैं आपको एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ये स्टैंड ये टर्शियरी सेंटर है. दिस कांट बी डन इन द प्राइमरी लेवल विच यू आर होल्डिंग इट, बट यू आर द राइट पर्सन टू सेलेक्ट to send the patient to the right place. This is important, and I believe this facility should be in the public sector, not in the private sector. In private sector, you know, जो भी आपको भी पता है. तो ये दिस आफ्टर स्कैनिंग ये जिस तरह की है, दिस इज डिफरेंट. ये हमारे पास डायरा CT है, उसके बाद स्टेंट रिट्रीवर स्टेंट डालना पड़ गया था क्योंकि नाली बार बार बंद हो रही थी. बट इट्स नॉट हियर टू बी शेयर. This is our first case when we did it at LGH और along with my team. और उसके बाद ये अंडर GA करना पड़ता है. डिफरेंट आफ्टर ये पेशेंट, इसके बारे में आपको से भी बताना चाहता हूँ कि अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है. ये पेशेंट की फैमिली आई, फर्स्ट केस, उन्हें कन्विंस किया, जुमे का वक्त था, कहते हैं जी आज इतने जो साहब की बेटी की शादी है, कल ना आ जाइए. और मैं कि यार पैसे असी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, यू शुड कम. और जब उनको ये चीज़ कन्विंस करके कि साढ़े टका नहीं लगता, साढ़ा बाप ही शायद बात चले. एंड दिस इज आफ्टर 3 weeks जब वो चल के वापस गया. दिस वॉज आवर फर्स्ट केस व्हेन वी डिड इट एट लॉर्ड जनरल हॉस्पिटल. दैट गिव मी अ करेज. This is the protocol which we are using it nowadays, and in which I am sure you people can involve with us. एक और मैं स्लाइड है, हाउ टू हैंडल द कॉम्प्लिकेशन एक्यूट स्ट्रोक में होती है. लकीली मेरी टीम के अंदर अब न्यूरोलॉजिस्ट भी आ गए, मेरे पास पर्मनेंट एनेस्थीसिया भी आ गए. एंड बिलीव मी, सबसे बड़ी हर्डल आप हैरान होंगे कौन थे. गवर्नमेंट नहीं थी, पब्लिक नहीं थी, मेरे अपने कोलीग्स थे. पता नहीं हम लोगों में आज का एक तबलीग करता हूँ, आप मेरे जूनियर्स काफ़ी बैठे हैं, मैं एक ही आज का तबलीग करता हूँ, यार किसी से सड़ो ना, जेलसी ना करो, अगर जिंदगी खूबसूरत गुजारनी है.
ये कॉम्प्लिकेशन का एक लास्ट लाइन में आपको दिखा के इजाज़त चाहूँगा जी। ये कॉम्प्लिकेशन है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये तो आफ्टर चेस्ट इन्फेक्शन तक भी होती है। सो वी नीड एवरी पर्सन, हर डिसिप्लिन का बंदा हमारे साथ इन्वॉल्व होता है। स्ट्रोक इंडिया, ये मैं इसलिए सिर्फ लास्ट लाइन इसमें आपको ये टोटल इंटरनेट प्रोटेक्ट बंद हो गई थी। वहाँ पर वहाँ मस्जिद था, मैंने मेरे स्टाफ ने पूछा पैसे कुछ हैं, कहते जी साढ़े बोलते खाते पैसे नहीं है। एंड दिस इज़ आफ्टर स्टेंट रिलीवर, और हमें उसका करोड़ निकाला यहाँ से लेके ऊपर तक, मैंने डायग्नोस्टिक कैथेटर से शुरू किया। कहते हैं जब आपका इरादा हो तो सस्ता थे, ये करोड़ निकले थे उसके अंदर, और उसके बाद ये थोड़ा सा स्लो जा रहा है। ये मैं आपको सिर्फ दिखाऊँगा, ये फॉलोअप, ये जब बाद में टांग जिसकी लेफ्ट हैंड वीक थी, बाद में ये चलती गई, और वो जो फीलिंग थी और जो उन माँ बाप की दुआएं थी, वो किसी करोड़ों अरबों रुपयों से कम नहीं थी। सो दिस इज द एज। मैं आपको कहूँगा यू शुड इन्वॉल्व विद अस, एंड आई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू द सोसाइटी कि इन्होंने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में और मुझे एक आम सा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। एंड इस माई रिक्वेस्ट भी है और आप लोगों के लिए ऑफर भी है, वेन एवर यू वांट टू कम फॉर फ्यू आवर्स, और रिया साहब सेंटर इसके अम्ब्रेला के नीचे जब मर्जी आए ट्रेनिंग दें। सिटी स्कैन अगर आप अच्छा पढ़ लेंगे, मरीज़ को आप शुरू में बचा लेंगे, एटलीस्ट एक खानदान साहब बचा सकें। थैंक यू।